Yes, it is Valentine's Day, or it is perhaps this week of the whole year जहाँ पर love is being propagated, celebrated, showcased, projected everywhere. It is this being talked about और सब जगह ये चल रहा है डिटेल के अंदर. Everybody is talking about it these days. मतलब इतना ज्यादा है इसका फीवर कि एग्जाम्स के बारे में भी बात नहीं होती कभी कभी और इसके बारे में ज्यादा बात होती है. So I was thinking about this and I thought, okay, let us discuss. Let us not, because there is a whole lot of thing mentioned in the scriptures about it, but let us not bring mainstream scriptures into picture right now. And let us talk about what is true love like. Is it something that we find over social media or over dating apps, or it is something which is developed over time? What is it like? क्या है? और आप लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में? This is something we would like to discuss. This is something, let us have a discussion around this. And I have some things to present, उसको मैं भी present करूंगा. But what are your thoughts and opinions on the topic that is in front of you at the moment? Simple सा हम रखेंगे. We can have a raise of hands and then we can say. Also, there is no right and wrong answer. कुछ सही गलत नहीं है. Every one of us is as ignorant in this topic as others are. So, yes. Anyone would like to speak? Or we can also write in the chat boxes if that helps. अच्छा, ठीक है. तो मतलब मुझे ही बोलना होगा ऐसा. मेरे को लग रहा है कि आप में से कोई अपनी चुप्पी नहीं तोड़ना चाहता है, या फिर no one wants to perhaps showcase their intelligence and extensive knowledge on this thing. ऐसा भी है क्या कि लोग सोचें, अरे मैं तो इसको सीधा साधा समझता था, सीधी साधी समझती थी, ये तो कुछ और ही निकली. ऐसा भी हो सकता है, नहीं? तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए. मीनवाइल हम अनूप से सुनते हैं. हाँ जी अनूप, बताइए. मतलब मेरे हिसाब से पार्शियली अपने हमारे नसीब पर भी निर्भर होता है और हमें डेवलप भी खुद से करना पड़ता है। नसीब पर निर्भर होता है. बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग बात बोली. नसीब पर निर्भर होता है. ओके. नसीब पे निर्भर होता है या फिर हम उसको, लाइक, कैन वी रियली अचीव इट? बिकॉज there is something called the law of attraction, and the law of attraction is, I guess, very much related to this topic, and it is all about. And interestingly, there is something which I was apparently told by one of the students, something called as manifestation. अगर आपने सुना है इसके बारे में तो कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? कैन वी प्लीज हैव रेज ऑफ हैंड्स टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में से किसी के बारे में किसने सुना है? ओके, एक अवनी ने सुना है बस. दो, तीन, चार लोगों ने सुना है. चार, पाँच, छः, सात. ओके, काफी लोगों ने सुना है इसके बारे में. ग्रेट. तो आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाट इज इट लाइक? क्या होता है ये एंड हाउ डज इट वर्क एक्चुअल में? और इन द मीनवाइल आप ये एवरीवन में लिखिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट टू मी. चैट ओपन है. सब राइट इट. यस, सिया. सिया का हैंड रेज है. सिया बताएगी. What's it? Either of the two things, either manifestation or law of attraction. What is it? How does it function? Um, sir, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब
would be like when you want something enough and that's all you think about, like and act towards it to make it happen, so it will you will attract it, like, so it can Hmm. happen with you. Yes. So if this is the case, then true love is something which is found, something which is discovered. Yes or no? Hmm. Anyone? Arindam writes something in the chat. Arindam, आप बताना चाहोगे क्या लिखा है आपने? तो जी वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हम्म लाइक आई थिंक इन माय ओपिनियन इट इज फाउंड बिकॉज अगर ये डेवलप होने वाली बात है, सो इट कैन बी डेवलप्ड फॉर सम रॉन्ग पर्सन आल्सो, जिसकी इंटेंशन प्रोबेबली हमें नहीं पता, या लाइक आई डोंट नो, ही और शी मे नॉट बी आर वेल विशर और एनीथिंग, हम्म सो लाइक इट कैन गो रॉन्ग एज वेल. Okay. But true love is, वैसे it is found, and so is it like written in everyone's life, and or how do we find it? Is it like we stumble इज upon इट that लाइक person? व्हाट? तो जो ट्रू लव which is found जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो is it something which we stumble upon, या फिर we can find a way or a means to find that thing, that person? मैंने सोचा नहीं कभी उसके बारे में. Okay, Vrinda Yeah. had something to share. Prabhuji, I wanted to say that I believe that we find the person and develop the love. Okay, we find the person and develop the love. Okay. Mm-hmm. Radhika? I was going to say the same thing, Prabhuji, because I believe that we whatever we will see, hear, and hear, Right now we can neither see nor hear. प्रभु जी राधिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है. You move to a stable network and then speak. प्रभु जी बोलो अनूप. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लव के नहीं ऊपर नहीं, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन का टाइम नहीं है, पर अभी तो आपको बोलने का टाइम है. मतलब आपको हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है कोई नहीं. यस. हाँ राधिका टाइप. यस, और भी लोगों ने हाथ खड़ा किया था. एनीवन हु हैज सम अदर आइडिया और थिंग अबाउट दिस? अवनी, यू रेज योर हैंड, आई सॉ. हार्दिक प्रभु, एक्चुअली मैंने एक रॉन्ग इसको सेंस में लिया. आई थॉट आई वाज टेकिंग इट इन केमिस्ट्री की लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो एटम्स एक दूसरे से सही है. गौरांग फिजिक्स बोल रहा था, ये केमिस्ट्री बोल रहे हैं, हम यहाँ बायोलॉजी की बात कर रहे हैं. साइंस में ही कंफ्यूज हैं बेचारे बच्चे. वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी राइट नाउ, इंटरनल बायोलॉजी सो टू से, नॉट द एक्सटर्नल वन. हाँ. सो ट्रू लव, अगर like from what I've heard, if true love is something which is developed, so then it can be developed for anyone. ऐसा हो सकता है क्या? किसी भी व्यक्ति के लिए डेवलप कर सकते हैं ट्रू लव, देन गिविंग इट द राइट टाइम एंड स्पेस, किसी के लिए भी वी कैन डेवलप ट्रू लव. और अगर ऐसा केस है, तो फिर वो ट्रू लव होगा कि नहीं होगा? बिकॉज देन देयर कैन बी मल्टीपल ट्रू लव्स. एंड व्हाट व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? जिन लोगों ने बोला था, वृंदा said I guess on this thing, it is something which is developed with a person. अरिंदम तो खुश है क्योंकि अरिंदम ने तो बोला था कि वो मिलता है. Yes, if it is developed after meeting a person, then we can develop it like many number of times, right? So then every time we'll say that we have found our true love. And so is it the case? Yeah, for true love is only found once. It is lived only once.
बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, जो आपने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, क्या लगता है आप लोग को इसके बारे में? Hmm? Okay, let us make it easier for you people. Uh, hmm. आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी अभी ना? Can you people give some examples of instances where you have seen real love in this world? कोई इंस्टेंस दे सकते हैं आप जो आपने देखा हो अपने आसपास? डोंट गिव मूवीज का एग्जांपल, इस पर्टिकुलर मूवी में इन दोनों के बीच में वैसे था, दिस वाज समथिंग माय डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव, बट सम इंस्टेंसेस वेयर यू हैव सीन रियल लव, कोई है ऐसा इंस्टेंस जहां पे आपने देखा है आज तक? टेक योर टाइम एंड थिंक, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, वी जस्ट वांट द राइट आंसर्स फॉर दिस. Anup has an answer. Yes, Anup. आई सीन गुरु शिष्य। गुरु शिष्य. गुरु शिष्य के बीच में जो प्रेम रहता है उसे मैं मानता हूँ ट्रू लव है। हम्म. ओके. Radhika says she has seen it in her great grandparents. Okay. Reet has seen true love. So, Reet, is it between your parents or is it between you and your parents? Between my parents. Between your parents. Okay. You have seen true love between your parents. Very good. And anyone else? Any instance where they've seen? ऐसा ही होता है ना जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, सब ऐसे देख रहे होते हैं सीलिंग को इधर उधर देखते हुए, किसी को आता है किसी को नहीं आता, ये वाला. दिस इज एन इजी क्वेश्चन स्टिल स्पीकिंग, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, दिस समथिंग. अच्छा, टिल द पॉइंट, टिल द टाइम अदर्स आर थिंकिंग, जिन लोगों ने ये देखा है या एक्सपीरियंस किया है, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू से दिस? जैसे इफ आई आस्क टू Radhika, you say that you have seen it in your great grandparents. Why do you मतलब what have you seen? क्या देखा है आपने जिससे आपको लगा कि yes, they share true love? या फिर Reet, you have seen it between your parents? What? या फिर Vinda, you have seen it with your brother? What? या फिर Lakshmi and Chanchal, you have seen it between your father and grandfather? What exactly? What are those symptoms? What are those activities? What are those actions, thoughts जो define करते हैं उस true love को? What is it like? या फिर घृति, between a devotee and a lord. So क्या होता है exactly? जहाँ कहीं भी आपने देखा है ना? So now we have got some examples. आपको कुछ example मिले हैं, उसके बेसिस पे आप सोच सकते हैं इसके बारे में, and then you can also tell कि क्या देखा है आपने ऐसा जिसके बेसिस पर you see that it is true love बोलते हैं.
You can take 30 seconds, सोचिए और फिर बताइए मुझे. मैं म्यूट पे था, सॉरी. यस. हाँ, राधिका आई बिलीव इज इन अ लो नेटवर्क जोन, बट आप में से कोई बोल सकता है ये जो लिख रहे हैं? लक्ष्मी एंड चंचल, कैन यू स्पीक व्हाट यू आर राइटिंग? स्पीकिंग हेल्प्स अस बेटर हरे अंडरस्टैंड. कृष्णा प्रभु। हाँ जी. प्रभु जी मतलब अ, दादाजी में और पापा में ये रहता है कि वो चाहे कितना भी लड़ ले या फिर कुछ भी एक दूसरे को बोले, बट एंड में उन दोनों का वही सेम बॉन्ड रहता है और हमेशा एक दूसरे की केयर करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे, और हम्म. अगर मतलब किसी किसी के साथ कुछ हो जाता है, हेल्थ इश्यूज या फिर कुछ वैसे, तो बहुत ज्यादा केयर रहती है उस इंसान की कि ऐसे हो गया, मतलब खुद के ऊपर ब्लेम डालते कि मेरी वजह से हो गया, अगर मैं उस वक्त उनके साथ होता तो मे बी ये नहीं होता। ओके, सो इट इज अबाउट केयर एंड कंसर्न. ओके, वेरी गुड. केयर और कंसर्न होता है बहुत स्ट्रांग, जिसके बेसिस पर आप देख पाते हैं कि आपके पिताजी और आपके दादाजी के अंदर वो, यू कैन सी दैट ट्रू लव. और वृंदा. जी सेम पॉइंट दैट हाउ मच एवर वी फाइट, मतलब एट द एंड ऑफ द डे पैचअप हो ही जाता है, नो मैटर हाउ मेनी हर्डल्स कम इन द पाथ. हम्म. तो ये चीज है बेसिकली दैट इट्स नॉट लाइक, कभी भी ऐसा नहीं लगता दैट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा. इट इज ऑलवेज वेरी सिक्योर एंड सेफ. ओके, सो इट इज सिक्योर एंड सेफ. आपको लगता है कि देयर इज, हाँ, कुछ भी लड़ाई या झगड़ा हो जाता है उसके बाद भी इनफैक्ट द थिंग रिमेन्स, इट इज नॉट, सो सिक्योरिटी है बेसिकली. ओके. और रीत, आप, यू वुड लाइक टू टेल समथिंग? Um, for my parents, there is care and concern. Like they're concerned for each other and हम्म. they take care of each other when they're sick or when they have like problems. वेरी गुड. And when they're like away from each other, they will still call and keep up with what's happening. ओके, सो रीत ने एक बहुत स्पेशल पॉइंट बताया, इट इज सर्विस ऑल्सो. जब एक व्यक्ति इज सिक और इन ट्रबल, तो उस समय पे देयर इज सर्विस अटैच्ड विद इट, कि वो उनका केयर करेंगे, स्पेशली उस समय पर ध्यान रखा जाएगा उनका और उनको हेल्प किया जाएगा सो दैट दे बिकम बेटर. दिस इज देयर. And when they are far away, they're away from each other, they also keep a tab. Yes. और कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा ऐसा? और क्या क्या तरीके से हम देखते हैं दिस लव, रियल लव, आस्था? I feel कि even if everyone is against you, but that हम्म. person will stand up with you on your side because they trust you and know that you are right, no हम्म. matter what. ओके, सो ट्रस्ट इज अनदर थिंग. ट्रस्ट इज अ ग्रेट थिंग एक्चुअल में. वो हमको दिखाई देता है कि दैट पर्सन स्टैंड्स विद अस एंड दे बिलीव इन अस, दे अपलिफ्ट आवर मोरल वैसे भी, एंड दे हेल्प अस. सो दैट इज अनदर सिम्टम जिससे हम देख सकते हैं व्हाट इज ट्रू लव लाइक. वेरी गुड. और रियल लव, एनी अदर सिम्टम्स यू हैव सीन अराउंड यू जिससे आप देख सकते हैं
आप समझ सकते हैं व्हाट इज ट्रू लव लाइक। मैं चाहूंगा कि सब लोग कुछ ना कुछ बोलें, पार्टिसिपेट करें, बी रियली नाइस। एंड बाकी लोग जो कैमरास ऑफ करें वो लोग भी कैमरास ऑन कर लें। आस्था, गौरांग, वृंदा, हर्षित। यस, ठीक है। सो दिस इज वन साइड ऑफ द रियलिटी दैट वी आर शेयरिंग, जहां पे हम बता रहे हैं व्हाट इज ट्रू लव लाइक, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। इट कंसिस्ट ऑफ केयर, इट कंसिस्ट ऑफ कंसर्न, कंसिस्ट ऑफ ट्रस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सर्विस, एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ट्रस्ट। ये सब चीजें। राधिका राइट समथिंग। No, हम्म। it's more like care for each other. It is care for each other. Would you like to elaborate on this? No, like छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, and caring for each and every point Hmm. about a person is also true love. It really shows and defines a person and how much they love you. Okay. Can you give a real life example about this? Okay, let's say आज मैंने अपने नेल्स कराए हैं और मैं अपने मामा के पास गई हूँ और मैंने मामा को नहीं बताया, लेकिन she noticed and she's like, Hmm. your nails look very beautiful, and she admires me about that. She's like कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, you look really pretty with them. तो मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में मतलब नोटिस करना एंड उनके बारे में उनको कॉम्प्लीमेंट करना, उनको अच्छा फील Hmm. कराना, ऑल्सो वे टू एक्सप्रेस योर लव टुवर्ड्स समवन. Very nice. Attention to detail is a sign of love. So it is about the person is observing you and what are your different things. Uh, this is exactly. So these are some subtle nuances which are included. Now, interestingly, or I should say contradictorily, जो हमको पिक्चर दिखाया जाता है ट्रू लव का, what is presented, what is propagated in in the name of Valentine Day is something different, is it not? Valentine's Day का हम जब एड्स हम देखते हैं या फिर हम उसका एडवर्ट हम उसका सोशल मीडिया प्रमोशंस देखते हैं, इट इज ऑल एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल्स. It is it is a syndrome called as the PDA syndrome. You know PDA का full form? PDA stands for public display of affection. Publicly अपना affection को display करना by giving gifts, by publicly proposing, by posting Instagram stories, by sharing on your WhatsApp, Snapchat के ऊपर ये डालना, and then at each and every post or status or story, you're just showing that you're madly in love with the other person and that you can't live without that person, and that person means the whole world to you for 2 months. But yes, for 2 months, that person means the whole world to you, or even lesser to say. And then there are people who are just, so I like to use this term, something called as the dil fake ashik. Everybody's become that at the moment. Okay, I am wearing my heart on my sleeve. It is easily available. जो भी मेरे को हाँ बोल देगा, I'll say. There are beautiful songs on it, on in Bollywood also. पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही. And everybody is dying after it. हाँ, कोई थोड़ी देर के लिए कर दे, कोई हमको छोटा सा गिफ्ट दे दे, कोई हमको प्रपोज कर दे, बोल दे will you be my Valentine, एवरीथिंग, और इसको पूरा एक 7 डे 14 डे फसाड बना दिया है जिसके अंदर इट इज ऑल द डिफरेंट डेज, चॉकलेट्स, टेडी, रोज, प्रॉमिस, प्रपोज, एवरीथिंग इज हैपनिंग. तो this thing is actually presenting a totally different side of reality. एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं जहां पर it is so much inside, the true love is inside, it is about all the inner things, it is about caring,
concern, it is about service, it is about trust, it is about attention to detail, ये सब चीजें. And on the other hand, we are seeing it is being presented externally. So my question to you is, of course, like these gifts help us. They are a way to express our emotions. They help us in that sense by sharing it, by expressing, by reciprocation. But is real love actually in hugs and kisses? Is it just in gifts and hugs and all these things? Is PDA defining true love? The public display of affection, जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिसके बेसिस पर वी आर गेटिंग स्वेड, जिससे हम इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि हमको फोमो हो जाता है. See, honestly, love is a feeling. It comes very naturally, and if it's हाँ, coming naturally through hugs and gifts, then it's actually acceptable. very If it good. if it's coming in a way of talking to someone sweetly, or expressing their way in poems, or मीठे शब्द जैसे बोलते हैं, हाँ मतलब जी. that is their way of expressing love. But हम्म. it's just how you express your love. It's you just need to show your love sometimes हम्म. for the other person to actually know that they love you and you love them. So to just make it work, to just let it go with the flow, you just need to express your love sometimes. It doesn't matter with what. It might be I hugs, gifts, just I a little text agree. message. I agree on this, I and just therefore want to I'm say, asked. Okay, never yes, mind. please, No, it's please. fine, it's fine. I बोलिए just बोलिए. want to say, um, people lie so easily, and they can bring you as many gifts as you want, but you don't really know what they're actually thinking about. So how do you actually know if someone loves you? Hmm. Because they can say as many things as they want, and in reality, maybe they don't actually think it. Maybe they're just saying it to sway you. Gaila, the feeling. It's all about the feeling of love. If you're But not they're not, feeling they're not feeling that same way. अच्छा ठीक है, इतने अच्छे The से f- pretend अगर कोई कर देता है कि they love you, then you should not be that of a you should not be so much of a fool in love. हाँ, मतलब but you दूसरा don't बंदा really know, कितने ना, because teenage is the age when these hormones are actually very high, and at this age you don't really know if it was actual love, if the feeling was permanent, then why it is, मतलब why are breakups happening so often? Why is it followed by a feeling of jealousy when the same person is talking to another girl? Or please try to understand what I'm telling. because I don't know. The I mean feeling they are should be The feeling should not be so temporary, so transient that it just shifts from person to person to person. And if anyone talks to you with such sweet words, it is not, मतलब मीठे शब्द बोलना is not at all difficult. बहुत आसानी से बोल सकते हैं. I can write the same message, heart melting message, and I can send it to 15 different people. And जिसने भी हाँ बोल दिया मैं उसके साथ चला जाऊंगा. And if I have a lot of money, I can give the same amount of gifts also, adding my touch of personalism. Chat GPT अच्छा कर देता है इसको तो बहुत अभी तो. You just have to give the right prompt, and if you are accepting it, of course naturally feeling तो आएगा ही, because somebody written it with so much of emotion सबके बारे में. that But is you that have to, is definitely a point, that it could be probably artificial, or it could be something fake. But you just need to actually be aware of it. मतलब and how do you be aware of it? How will you be aware of it? मतलब भाई, if you're actually in love, then you would obviously like go around, see what he's doing, look at his activity. I mean, Okay, it's very general. let us compare it with another example. Gifts, hugs, all these things, जिसके भैया मीठे शब्द के बारे में बात कर रहे हैं. May I please know your name, or should I use your nickname? What is visible to me? Oh, my name's Radhi. Vradhi. Okay. So Vradhi, do you think your parents love each other? Yeah.
Do your and your grandparents, if you've seen them, they love each other. Yeah. And how often have you seen them doing all of this, which you call as true love? Those I mean, my parents sweet, and my grandparents always, yeah, these sweet things are very general and common at my house. In sweet fact, exchange of if we words, talk, gifts, exchanges, all yeah, this sweet thing. exchange of words, compliments, a good morning with like hearts and kisses. Every day it happens, and that's how I'm like, that's a type of surrounding I'm in. And if the other person is doing it for me, I will generally feel like a family, and I will definitely have feelings with that person. I mean, it's very general. It's like human nature. If you're treated like, listen, actually the way you want to be treated, then it's very natural that you will actually go and you will actually say yes to that person. Definitely human nature. To if someone treats you kindly, someone treats you with concern, someone treats with love, I think that should stay also. Your parents are saying it with each other, and the feeling of love is not transient. There will be a lot of times, perhaps you should go and ask your parents, perhaps you know it, when that feeling is not there, when there is some agony, when there is some feeling of rift between them, and still that thing stays. If your feeling is just based on these things, when this does not happen, वो break हो जाएगा. But this is not the case with families. Why they are subsisting, why they are still sustaining, why they are still continuing, is because इसके अलावा और बहुत कुछ है जो हमने डिस्कस किया है ना, इनर फीलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं. देयर इज दिस कंसर्न, देयर इज सैक्रिफाइस, देयर इज केयर, ये सब चीजें. एंड ये सब लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए वी नीड सब्सटेंस. वी कैन जस्ट नॉट रिलाई ऑन आवर फीलिंग्स. फीलिंग्स बहुत टेम्पररी हैं. दे कम एंड गो लाइक एनीथिंग. दे कम एंड गो विद हॉर्मोन्स हैं. अच्छा मेरे को ये बताइए कि ये जो वैलेंटाइंस है जो सब अभी चल रहा है, एवरीथिंग दैट इज हैपेंड, जो भी सब होता है, व्हाई इज ओनली टीनेजर्स, व्हाई इज ओनली द यूथ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ देम? ओल्ड पीपल में भी तो होता है ना लव, उसको क्यों नहीं प्रेजेंट किया जाता है? बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ मार्केट, जहां पे हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जा रही है. सॉरी टू से दिस, बट वी आर जस्ट बीइंग फूल्ड थ्रू ऑल ऑफ दिस. जहां पे हमको दिखाया जा रहा है कि इफ यू कैन डू दिस by getting some really good gifts in the shape of hearts, chocolates in the shape of hearts, balloons in the shape of hearts. You go to a very good restaurant, you get all of this. आपके लिए फ्री इतना अच्छा डील रहेगा सबके बारे में. This is just a propaganda. इसके थ्रू हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है. The same thing can And be my applied ना. हाँ in जी. my opinion, I'm sorry to interrupt, but in my opinion, आई थिंक ये दिन उन लोगों के लिए होता है जो लोग रोज रोज ये चीजें नहीं कर पाते, जो रोज रोज हम्म. इनके लिए मतलब ये करना चाहते हैं, बट ये इनको मतलब स्पेसिफिक टाइम और कॉन्फिडेंस नहीं मिलता वो करने के लिए. एंड आई तो थिंक एक दिन में कैसे ये दिन कॉन्फिडेंस आ जाता है? probably क्योंकि many people are doing it and they think कि आज सबने किया है, मैं भी कर सकता हूँ. मैंने ओके. इतना अगर if I went up to that person and said that I like you, है ना, सो और एक बार इतना कॉन्फिडेंस आया है, तो इट जस्ट हाउ गिव्स डू अ यू रीजन फॉर पीपल. हाउ डू यू देन डिफरेंशिएट कि वो फोमो है, फोमो नहीं है, और ये है जो आप बोल रहे हो? आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे उस चीज को? नर्वसनेस भी हो सकती है. नर्वसनेस, वही मैं कह रहा हूँ. तो ठीक है, आई एग्री ऑन दिस. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. आई वी माय प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद सेलिब्रेशन ऑफ लव लाइक दिस. बट द पॉइंट इज कि सेलिब्रेशन के साथ में ना, वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि आर हम इस दिन को ऐसा देख लव रहे हैं जैसे मिस ना हो जाए वैलेंटाइन से. लव कि एक्चुअली हम इस दिन को ऐसा देख रहे हैं कि इट हैज बिकम द एनिमी फॉर ऑल ऑफ अस. बट नो, लेट्स से हु इज व्हेन हु दिस इज हु इज वाज, सीइंग इट दिस? कैस कौन कौन ऐसे आई देख एम रहा है इसे? आई एम जस्ट सेइंग फॉर एन एग्जांपल, अगर इस यूथ की बात करें तो जैसा आपने पहले भी बोला था कि दिस यूथ इज टेकिंग इट एज अ व्हाट डू वी से, एज एंड अटर एग्नी की मतलब ये दिन क्यों बनाया गया. बट लेट्स से अगर पहले के मैंने तो दिनों में नहीं जब बोला इस पर दिन को ऐसे, ऐसे, मैंने तो नहीं बोला पर ऐसे.
मैंने बोला क्या? आपने अभी बोला। बट एनीवेज आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये यूथ ऐसा मानती है कि ये जो दिन है इट्स क्रिएटिंग अ लिटिल कंफ्यूजन विद ट्रू लव एंड इट्स ब्रिंगिंग अप रैंडम थिंग्स की जैसे एक दिन पहले तो यू डिडंट लाइक मी एंड आज कोई वैलेंटाइंस के लिए चाहिए तो यू आर कमिंग अप टू मी। बट आई थिंक जब ये एक्चुअली डे डिस्कवर हुआ था ना तब उस टाइम पे लोगों को ये दिन एज अ अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि इस दिन पे ये स्पेशल है और इस दिन को मैं अपने पार्टनर को ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे कि जैसे पहले ना किया। लाइक Cool. अच्छा है. इट्स We हिज agree स्पेशल on डे। this. We agree on this. And all of these are Western concepts. According to our traditions, it is something which is not the Vedic traditions. जो Indian culture है, it is all about respecting the person, and it is meant to be done every year. It is not just one thing. हाँ, but yes, there are some people जो पूरा दिन नहीं कर पाते, like yes, पूरा साल नहीं कर पाते, so they get confidence for 1 year. Okay, agreed on that. Sia wants to say something. हाँ प्रभु जी, आई एग्री विद वृद्धि कि मतलब अगर आप यूजुअली किसी दिन में अपने द पर्सन हु यू लाइक उसको बोलो कि आई लाइक यू, तो इट बिकम्स अ बिग डील कि अरे दिस पर्सन लाइक्स दिस पर्सन। बट वैलेंटाइंस डे इज एन अपॉर्चुनिटी कि मतलब since everyone's saying so you're not the only one, so you won't be क्या कहते हैं कि लाइक इसने तो बोला नर्वस हाँ, कि yes, मतलब मैं अकेले ना since छूट जाऊं। agreed, exactly agreed. since मैं ही बोल रही हूँ तो सब लोग मुझे ऐसे देखेंगे, everyone saying, Yes, so you also get confidence to नहीं लाइक इट sure. see विल your बिकम feelings. सच अ पॉपुलर थिंग। इट विल बिकम लाइक कि मैंने बोला मे बी अग्रीड. समवन तो एल्स हाँ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगे, सारा अट्रैक्शन आपके ऊपर से हाँ जो अटेंशन है वो हट जाएगा, एंड देन यू कैन आल्सो मूव अहेड yes विद दिस एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. यस, yes अग्रीड इन दैट सेंस. जैसे मम्मी को बोलना कि मम्मी आई रियली वैल्यू यू एंड आई लव यू इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, बट मदर्स डे पे बोल देते हैं कार्ड बना करके. हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बट इससे ऊपर भी उठना है. नहीं ठीक इफ है। आपने लेट्स से अगर आपके पास इतना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपनी मदर को जाके हाँ, आई तो मैं लव यू आपको बोलो यही तो बेटा। कह रहा हूँ. ये तो रोज बोल तो रहा हूँ कुछ कि करते उस होगे ना। इफ यू लव हाँ, देम रोज कुछ ना कुछ करती होगी। दैट्स हाउ यू फाइंड आउट दैट दे लव यू। कि अगर ठीक है एक स्पेशल दिन है अगर हम वैलेंटाइंस को छोड़ दे तो क्या रोज वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं? रोज क्या वो आपके लिए कुछ 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 ना कुछ वन थिंग एटलीस्ट। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो हो रहा है, उससे ही पता लगता है. वैलेंटाइंस डे इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ इट. दैट इज व्हाट आई सेड. सो रियल लव इज मेंट बाय अदर थिंग्स, जो साल भर होता है. इट इज नॉट जस्ट वन डे, सो वी शुड नॉट गेट स्वेड बाय इट. राधिका, you wanted to add something? No, you already said the point. I had the same point that it's an expression. It's a day where, yes, you can express true love. It's meant for that. But nowadays, people are taking it as fun, as some kind of game. They are Hmm. playing it just like an arcade. एक दिन गए खेल कर आ गए. So we don't want it to be like that. I agree with your point, Vriddhi. Sorry, whatever इट्स your name फाइन is. इट्स फाइन। Yes. Sorry. आज का यूथ अगर इसको ऐसे ले रहा है राइट, अगर आज का यूथ ऐसे ले रहा है एंड पहले के यूथ ने शायद नहीं लिया है तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूथ। आप उस स्पेसिफिक दिन को इस I मुझे am not वो blaming मुझे any. यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि why are you acting as the spokesperson of today's youth when there is no one who is defaming them. मतलब who are you trying to defend आई at एम the नॉट इवन moment? टॉकिंग अबाउट द यूथ। नो आई एम सेइंग एज अ जनरल पर्सन। आई एम सेइंग But अगर वैलेंटाइंस डे मेरे को मतलब एक दिन देता है सेलिब्रेट करने के लिए जैसे मेरा बर्थडे है तो आई विल डेफिनेटली गो एंड डू इट। आई मीन but no one कम has ऑन पीपल। stopped you. No one has stopped you. ना मतलब why are you bringing this point again and again? I'm not able to understand actually. If I would have stopped you, if I would have said anything against you, then it would make sense of speaking this two, three, four times. I'm not able to actually understand. It would help me understand. ओके फाइन सॉरी आई जस्ट I think it is just the anguish which you have felt before and that is coming out here. Perhaps. Nakshatra, you want to speak something? Prabhuji, I would just like to say that when you are in true love with someone, it does not mean that you have to do something every day or you need to have a specified day for it. You take an
opportunity where it is presented, if you're busy on Valentine's Day, it doesn't mean that कि उसी दिन करना है, किसी और दिन कुछ स्पेशल कर लो उस इंसान के साथ, and it doesn't limit you to a extent कि उसी दिन आपको वो करना है. It every day is an opportunity to show love towards a person. Thank you. Very rightly said. Every day is an opportunity. Devansh, you had something to add. सर अगर वैलेंटाइंस डे इसीलिए है कि और दिन टाइम नहीं रहता तो इसलिए वैलेंटाइंस डे निकाला है, और अगर वैलेंटाइंस डे के भी दिन किसी के पास टाइम ना हो हम्म तो उसके लिए क्या उसको लीप ईयर का वेट करे 4 साल में एक बार, और क्या. व्हाट एल्स कैन वी डू, पूरा साल जिसके पास टाइम नहीं है. ठीक है. Coming back, so there is a very famous author called as Gary Chapman. He writes something called, he's written a very wonderful book on the 5 languages of love, wherein it shows about there are 5 different ways by which we can express our love, and it is not limited to one thing, it is limited to acts of service. For example, your mother. So Vradhi has seen it in her house, but you people may not have seen it in your houses, wherein there is a sweet exchange of words. Because मैंने अपने घर में देखा है बचपन में, there is a lot of fights that have happened. And even after the intense, heated fights that have happened between my mother and father, मेरी अम्मी फिर भी रोटी बना करके देती है और पापा भी खाते हैं उसको, और फिर पापा बोलते हैं कि एक रोटी और चाहिए, और फिर मम्मी देती है. If it was like really meant or bent or just dependent on sweet words, तो perhaps ये नहीं होता. But the whole main reason why families are bonded, the reason why India as a culture, as a country is subsisting was because of its joint families, and it is totally and totally based on this thing. Acts of service, है ना, यहाँ पर ये चीजें हैं. It is about quality time being spent with each other, and yes, there is a exchange of gifts. Perhaps marriage anniversary पे या birthdays पर कुछ gifts exchange होते हैं, but it is more based on this thing, these acts of service. Physical touch and words of affirmation are something which is not very much common, which have not been common before. And yes, today's youth, as Vradhi is rightly advocating, is more focused on all of this. And yes, as times are changing, as trends are changing, this is the case. But more than the externals, the internals have to be solidified, and they have to be strengthened. वरना जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है कहीं और होता हुआ दिखाई देगा, तो हार्ट ब्रेक भी उतनी जल्दी होगा. We see many different stories from the scriptures जो उसको वैलिडेट करते हैं. अगर आप लोगों ने महाभारत पढ़ी है या सुनी है, आई एम श्योर काफी लोगों ने पढ़ी सुनी होगी महाभारत, तो महाभारत के अंदर देयर कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ शांतनु. शांतनु के बारे में सुना है आप लोगों ने? शांतनु was the father of भीष्म पितामह. भीष्म पितामह के बारे में सुना होगा, आई होप आप लोगों ने. Okay. Some people still need to do some work in all of this. So Shantanu finds his true love in Ganga. He sees and he's immediately enamored, and he feels this upsurge of feeling, and he also does the thing by expressing his true love without a Valentine's Day to Ganga by saying that I am mad in love with you and I'll do anything for you. मैं आपके लिए चांद तारे सब कुछ तोड़ करके लाऊंगा, आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ. Ganga really feels special, and uh, holding that feeling in her heart, what does Ganga do? Ganga says कि yes, I'll marry you, but I have one condition. क्या कंडीशन है मेरा? कि मैं कुछ भी करूंगी ना, you will not question me about it. और जब आपने क्वेश्चन करा, जब आपने मेरे को रोक दिया, I'll just go away. So they have a very good time. They are enjoying everything from words of affirmation to gifts to physical touch and all sorts of things. They are enjoying wonderfully. And then they have their first child, और उनका पहला चाइल्ड होता है, और गंगा जाती है और उसको जाकर के गंगा में
प्रवाह कर देती है नदी के अंदर। शांतनु remains silent because Shantanu is attached to the lady, and he remembers कि she is my true love. I don't have to say anything, otherwise the true love will break. और इट कंटिन्यूज अगेन, और उसके बाद सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है। ही हिज उसका जो एंगर है वो बढ़ता जा रहा है, और उसका बॉन्ड, उसका जो डैम है टॉलरेंस का, वो खत्म होता जा रहा है। सेवेंथ चाइल्ड को जाकर के गंगा फिर से प्रवाह कर देती है। व्हेन इट इज द एट्थ चाइल्ड, शांतनु's डैम इज ब्रोकन। ही इसको समझ आता है कि शी वॉज नॉट माई ट्रू लव, और वो जाता है, जाके उसको रोक देता है। एंड देन गंगा लीव्स, एंड गंगा गिव्स द चाइल्ड विच बिकम्स भीष्म पितामह, है ना, जो हमने पढ़ा है। देन अगेन आफ्टर सम टाइम Shantanu again finds true love, this time in the form of a lady who was the daughter of a fisherman, सत्यवती, मत्स्य नरेश की पुत्री सत्यवती के साथ। एंड ही अगेन फॉल्स इन लव, और उनको लगता है कि यही मेरी जिंदगी का सच्चा प्रेम है, और मेरे को इनके साथ में आई हैव टू मैरी हर, वो सब करते हैं। बट देन देयर इज अगेन अ कंडीशन। इस बार कंडीशन क्या होता है? क्या कंडीशन होता है रिंदम? सत्यवती के जो फादर होते हैं, ही सेज कि जो मेरी बेटी का जो बेटा होगा, ही विल बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुर, नॉट भीष्म पितामह। हाँ, और उसके आगे? दैट्स व्हेन भीष्म पितामह टुक द भीष्म एक, प्रतिज्ञा, व्हिच यस, इज एक और भी होता है साथ में उसके बाद। वाई भीष्म पितामह डज नॉट मैरी? ओ करेक्ट, कि उनको उनको लगता है कि अगर अगर एक बार सत्यवती का बेटा राजा बन जाएगा, लेकिन आगे वाली जनरेशन तो फिर भीष्म पितामह के जो आगे बच्चे होंगे फिर तो वहां से कंटिन्यू हो जाएगा। तो हाँ, ही फील्स कि मेरी बेटी की लिनेज नहीं चलेगी, तो दैट। यस। हम्म। तो यहाँ पे एक और कंडीशन आता है, और सत्यवती के साथ रहते हैं, बट देन शांतनु हैज टू गिव अप द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर टू सत्यवती सन, जो दो पुत्र होते हैं विच वर नॉट वेरी क्वालिफाइड एंड नॉट एक्चुअली डिजर्विंग, वो लोग नहीं होते, उसको देना पड़ता है। एंड भीष्म पितामह हु वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, एबल एंड वेलिएंट rulers, warriors, he is forced to just protect the throne because of acting on his father's condition. उनके father के condition पे act करना था, father के true love को justify करने के लिए। What does Bhishma Pitama do is this, वो just जा करके protect कर रहे होते हैं। This is one angle from the Mahabharata wherein Shantanu's love was based on feelings and infatuations, और जो उनको लग रहा था। We find another story in the Ramayana wherein there is Mother Sita, जिनको भी पहली बार जब देखते हैं भगवान राम को, तो उनको she really feels that feeling inside, उनको लगता है कि हाँ, that is my husband, that is my true love, जो मेरे को मिला है, और उनके साथ में I have to spend my whole life. And then after living happily for 12 years in the kingdom of Kosal, Ayodhya, one fine day when Lord Ram, उनका कोरोनेशन होने वाला होता है, दैट डे व्हाट हैपेंस, लॉर्ड राम को वनवास दे दिया जाता है 14 साल का। और जब 14 साल का वनवास दे दिया गया है भगवान को, तो फिर बड़ा नेचुरल है, सीता माता बोल सकती है कि ठीक है, जाइए आप, आई विल वेट फॉर यू वेरी पेशेंटली। जैसे शी कैन ऑल्सो से कि जब सोल्जर जाता है बाहर युद्ध लड़ने के लिए, तो उनकी वाइफ थोड़ी साथ में जाती है, वो उनका वेट करती है ना पेशेंटली, और आई विल लिव इन सेपरेशन ऑफ यू। ऑफ कोर्स स्क्रिप्चर्स में लव इन सेपरेशन को सबसे हाईएस्ट बताया गया सबके बारे में। बट सीता डिसाइड समथिंग एल्स। सीता हु हैड ऑलवेज लिव्ड इन पैलेसेस, इन पैलेशियल बिल्डिंग्स, इतना ज्यादा केयर होता था मदर सीता का कि उन्होंने कभी अपना जमीन जमीन पर पाँव नहीं रखा था। दैट मदर सीता डिसाइड्स टू गो इन द फॉरेस्ट टू accompany Lord Ram, leaving all her comforts, all her cozy places, all the luxuries. She decides to go. This mother Sita, and that is her love for Lord Ram. फिर वही मदर सीता 13 साल बड़े सुख के साथ व्यतीत करती है जंगल के अंदर। अब कितना ही सुख होगा आप उसमें समझ सकते हैं, बट स्टिल शी इज हैप्पी, सर्विंग, सेटिस्फाइड।
Then Ravan kidnaps her, and then for 1 whole year she lives in Lanka, and she had a wonderful opportunity. रावण he was he had this power जिससे वो खुद को एक बहुत सुंदर युवक में कन्वर्ट कर सकता था, and she he was he had placed 700 राक्षसीज जिनका एक नाक और एक सॉरी एक कान और एक आंख थी. इमेजिन कितना हॉन्टिंग सिचुएशन होगा वहां पर. एंड उनको रिपीटेडली टॉर्चर किया जा रहा है. सीता हैड टू जस्ट से यस वंस, एक बार हाँ बोलना था बस ये करने के लिए. एंड देन शी कुड हैव फाउंड ट्रू लव इन रावण आल्सो, राइट. शी कुड हैव सर्व्ड, बिकॉज उनके अंदर क्वालिटी था ही, तो वो रावण को भी उसी क्वालिटी के साथ, उसी सिंसेरिटी के साथ सर्व कर सकती थी. शी कुड हैव फाउंड ट्रू लव एंड शी कुड हैव लिव्ड एज रावण's mistress. But for that 1 year, she was waiting very patiently for Lord Ram. And when Lord Ram came, finally all of that happened. ये सब चीजें हमको रामायण की स्टोरी पता ही है. We also find another interesting character in the रामायण जिनका नाम था कौन थी लक्ष्मण की वाइफ? मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी. उर्मिला. 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 तो लक्ष्मण की वाइफ थी उर्मिला. आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, तो लक्ष्मण भी अपना डिजायर एक्सप्रेस करते हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू द फॉरेस्ट टू सर्व राम एंड सीता. एंड जब ये चीज बोली जाती है उर्मिला के सामने, ही गोज टू उर्मिला टू टेक परमिशन. तो व्हाट हैड मदर सीता डन? मदर सीता हैड अकम्पनीड लॉर्ड राम कि मैं जाऊंगी बिकॉज आई वांट टू सर्व माय हस्बैंड, दैट इज ट्रू लव. तो मैं भी जाऊंगी यहाँ पे उनके साथ में उनकी सेवा करने के लिए, so that after my husband is tired from serving mother Sita and Lord Ram, मैं उनकी सेवा करूंगी, है ना. तो ये एक और अच्छा प्रिंसिपल है. वैसे करके she can also express her love. बट यहाँ पे हम एक अलग चीज देखते हैं. यहाँ पे क्या होता है? Anyone knows the answer? Okay, Vradhi has unmuted. Vradhi, you know what happened next? I don't know. Okay. Vrinda? She feels that if she goes, then Lakshman would use his time. मतलब he would be concerned about her safety and her comfort as well. He won't be able to dedicate his entire attention to the service of Lord Ram and Mother Sita. And therefore, what quality does Urmila exhibit over here? क्या क्वालिटी दर्शाई जाती है उर्मिला के थ्रू यहाँ पर? Sacrifice. Sacrifice is another great thing which is not at all found in today's youth, sorry to say again. So what is true love? I've just made a small acronym which might help us understand it better. True love is being thankful, is being genuinely grateful for what we have received, है ना. और इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मेरे को आपने ये तो दिया बट ये नहीं दिया सब प्यार में. इट इज नॉट अबाउट होल्डिंग ग्रजेस कि मुझे इतना ही दिया बट उसको इतना ज्यादा दिया था, या मैंने आपको इतना दिया पर आपने मुझे इतना ही दिया. इट इज बीइंग genuinely grateful for what we have got, thankful. R stands for it is true love is also reciprocation. It is giving back what we have got. So it also means कि हम क्या कर रहे हैं in return. हमको तो मिल रहा है ना. True love is actually about giving. It is not about receiving. पहला first step is being grateful. Second is receiving, is giving what we have received. And third thing is unselfish या फिर जो sacrifice. It is about giving first without expecting. 12 कुछ समय ही हुआ था एंड उर्मिला वॉज नॉट थिंकिंग कि अरे लक्ष्मण ने क्या किया है मेरे लिए. ऐसा सब समय तो राम सीता के साथ ही घूमते रहे. जाना उनके साथ ही जा, उनका बच्चा बन जा, मैं जा रही हूँ जंगल अपने वापस अयो जनकपुरी. She could have said that, but she did not say that. It is about giving first without expecting anything in return. और आपको क्या लगता है जब 14 साल बाद वापस आए होंगे लक्ष्मण, तो क्या फिर उर्मिला के साथ में गए थे हनीमून पे या स्पेशल वेकेशन पे?
उसके बाद तो आते ही भगवान राम का कोरोनेशन हो गया, फिर उनकी सेवा में घूम रहे हैं आगे पीछे. बट इट इज अबाउट दिस, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट बीइंग एम्पैथेटिक, which Urmila wonderfully exhibited. It is about understanding what is the other person think. क्योंकि क्या होता है, हमको जब मिलना बंद हो जाता है ना, तो हमारा देना बंद हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब्सटेंस मिसिंग है. बट this is something we all need to understand, we all need to imbibe, we all need to develop. There is this beautiful quote by Francois de la Rochefoucauld, wherein he says, true love is like ghosts. Everyone talks about it, and a rare few have seen it actually. आसान नहीं है इतना देखना. You really need that thing, and you really need luck on your side in order to understand. I would like to end it by saying that love is something which is found and then it is developed. It is not something uh, which can just happen to you, and it is something which takes time. You have to invest the right amount of efforts in it. आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके अंदर, तब जा करके आपको पता लगेगा कि is it actually the right person who is for me in it for me. I have a few friends, actually two friends, who had uh, जिनका रिलेशनशिप था in their school time, and they capitalized on it, and now they're happily married. तो अगर आप इतना रेजिलियंस रखते हैं कि आप ऐसा कर पाए, आई वुड से गो फॉर इट. बट उससे ज्यादा, बट दे आर ओनली टू ऑफ फ्रेंड्स एंड आई हैव अराउंड 1,000 अदर फ्रेंड्स इन माय कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो बेचारे बहुत धोखे खाए हैं, बहुत रोए हैं, और आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है ये, तो यू नो इट मच बेटर देन मी कि क्या क्या होता है इसके अंदर बाद में ना. आई हैड अ फ्रेंड जिसका कॉलेज के फर्स्ट वीक में ही उसको सच्चा प्रेम मिल गया था, और दूसरे हफ्ते में हम उसको कंसोल कर रहे होते थे, जाके मोमोज की दुकान पे जाकर के बैठे खा रहे हैं, भाई कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, वो सब कह रहे हैं, वो मान जाएगी, कहीं तो मैं बात करता हूँ उससे, और ये सब चल रहा होता था. एंड देन थर्ड वीक दे वर मिसिंग क्लासेस, दे वर सिटिंग इन द स्टेयर्स, दे वर सिटिंग इन द कैफेटेरिया, ये सब चीजें टीचर्स को भी पता लग गया था ये है. एंड देन टीचर यूज्ड टू आस्क कि वो ईशान का है, अच्छा हाँ वो तो उसके साथ में होगा, तो अंडरस्टूड चीजें. एंड देन सेकेंड ईयर में दोनों के अलग अलग रिलेशंस बने, फिर थर्ड ईयर में अलग अलग रिलेशंस बने. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट राइट नाउ, इस समय पर ना, हमारे इमोशंस आर एक्चुअली वेरी हाई, हॉर्मोन्स आर सिक्रीटिंग, और इस समय पर उसको कैपिटलाइज करते हुए मार्केट ऐसा बना रखा है कैपिटलिस्ट ने ही, कि दे आर ट्राइंग टू फैन ऑल ऑफ दैट. जो छोटे छोटे स्पार्क्स है ना, उसको फैन करके फ्लेम्स बनाना चाह रहे हैं, सो दैट द हार्मोन्स गेट द बेटर ऑफ आवर इंटेलिजेंस, और हम जा करके डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूलिश थिंग्स, और उनका तो काम हो जाएगा, एंड देन वील परहैप्स बाद में जाकर के हम पछताएंगे. So, therefore, wait for the right time. If it is meant to happen to you, it will happen, but still you will have to put in efforts in order to sustain it. Varna, it will just be another feeling, and the feeling will go with time, with the other things, और शांत हो जाएगा सब. This is it from my side. Thank you very much. Any questions, discussions, other things from you people? See, I'll be very open over here, okay? Hmm. I'm being very open about my thoughts, honestly. And if you felt that I was speaking too much, I'm sorry. But I've been in a relationship for 1 year, okay? Hmm. And the thing is that we're both putting efforts, we're both having everything, the feeling is there. But sometimes, people, जो दूसरों के opinions होते हैं, वो affect करते हैं. Hmm. So what do you think? How can we get over that? I mean, we don't care about them, but कहीं ना कहीं अंदर they do affect.
Okay. I think, Vriti, this is something you'll have to endure. This is something which has to go along with. You can't shut up people. You can't do this at all. If this continues, and I hope you don't suffer a heartbreak, I'll really pray for it. But अभी स्कूल है, स्कूल के बाद कॉलेज होगा, कॉलेज के बाद यू विल गेट इनटू जॉब्स एंड अदर थिंग्स, तो लोग तो चेंज होंगे ही सब जगह से, एंड पीपल विल टेल यू अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, एंड लोगों का तो काम ही है वो करना. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट कम्स. एक बार एक पिता और पुत्र और एक गधा, वो एक शहर से दूसरा शहर क्रॉस कर रहे थे. तो the son was sitting on the donkey and the father was walking. So then people said कि ये क्या इतना निर्दयी सा बेटा है. पिताजी जो हैं वो बड़े हैं और वो चल रहे हैं और ये गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है आराम से. सो देन दे स्विच्ड. तो इस बार क्या हुआ, पिताजी बैठ गए उसके ऊपर और गधे के ऊपर और बेटा चलने लगा. सो देन पीपल सेड कि बाप देखो कैसा बेशरम सा है, जवान बच्चा है उसको चला रहा है, खुद आराम से बैठ करके जा रहा है गधे के ऊपर. सो देन both of them sat on the गधा और चल के जा रहे हैं. सो देन पीपल सेड कि देखो ये कितने निर्दयी लोग हैं, ये जानवर के ऊपर कोई उसको वही नहीं, ऑलरेडी सामान लाद रखा है और दोनों भी उसके ऊपर बैठ करके जा रहे हैं, किस तरह के लोग हैं ये. सो देन व्हाट डिड बोथ ऑफ देम, वो दोनों फिर उन्होंने क्या किया, उतर गए और गधे के साथ ऐसे चल करके जा रहे हैं. सो देन पीपल सेड ये लोग तो बेवकूफ है, गधा जा रहा है फिर भी दोनों ऐसे पैदल जा रहे हैं, कोई बैठ के जा सकता है ना उसके ऊपर. तो लोग तो बोलेंगे ही फिर मतलब. गधे को अपने ऊपर बैठा. पर गधे को अपने ऊपर बैठा लिया था, मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था. आई गधे को आई अपने होप, ऊपर बिठा लिया तो खुद ही गधे बिकॉज ना हो. बिकॉज आई होप कि आप लोग इतने समझदार हैं, तो मैं ये वाला पॉइंट नहीं बोलना चाह रहा था. बट यस, एसेंशियली द पॉइंट बीइंग कि लोग तो बोलेंगे कुछ ना कुछ, दे वांट समथिंग टू गॉसिप ना. हम लोग जब गॉसिप कर रहे हैं तो हम लोग भी तो ऐसे करते हैं ना, किसी ना किसी के बारे में कुछ तो बोलते ही हैं. एंड इट इज बेसिकली स्पीकिंग, इट इज कर्मा. कभी कभार इंस्टेंट मिलता है, कभी कभार थोड़े टाइम बाद मिलता है, कभी कभार काफी टाइम बाद मिलता है. हम वी गेट व्हाट वी डू. So if you really want to ठीक है. continue, if you really want to people continue, people yes, what? Yeah. हाँ, if you really want to continue, invest more and don't care. So you're basically saying ignore. हाँ, without saying ignore, I said ignore. Yes, Indirectly, yeah. yes. I hope that helps. Story की जरूरत नहीं थी technically, but जी, anyone else? Any questions, thoughts, comments on this? ठीक है, then let us go it the usual way जैसे हम जाते हैं. Let us speak one point that stood out for you from the session, and then we'll end. एक चीज जो आपको समझ आई, एक चीज जो आपको अच्छी लगी या दिमाग में है फ्रॉम टुडे सेशन. वी विल स्टार्ट विद पीपल जिनके कैमरास ऑफ हैं. देवांश से स्टार्ट करते हैं. देवांश, आप किसी का भी नाम ले सकते हो फिर. देवांश, ये भी अच्छा है, चुप रहना. ठीक है, रिद्धिमा आपसे स्टार्ट करते हैं. जैसे कि ट्रू लव कैन लव इज फाउंड एंड देन डेवलप्ड. ओके, किसी को टैग कर दीजिए जो आपके बाद रुद्राक्ष बोलेगा. दीदी. क्लास बहुत ही अच्छी थी आज की. और जो आपने 4 चीजें बताई कि दैट आर द रियल सिम्टम्स ऑफ लव, कि बीइंग थैंकफुल, बीइंग रेसिप्रोकेटिव एंड अनसेल्फिश, एम्पैथेटिक. तो ये मुझे काफी लर्निंग वाला पॉइंट लगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट. थैंक यू. टैग कर दीजिए किसी को. टैग दीपांशी. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी जिसमें आपने बताया कि
if you want to continue, so you have to capitalize. ओके, थैंक यू। टैग कर दीजिए किसी को। Vrinda Hare Krishna Prabhuji, lovely class today. So I wanted to say that मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा point ये लगा when we talked about when everybody was talking about where they have seen love. कई लोगों ने पेरेंट्स में देखा, कई लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स में देखा, ऐसे शेयर किया सबने। तो मेन चीज यही थी कि वी व्हेन वी लव समवन वी सैक्रिफाइस एंड हम अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी रहते हैं फॉर देम। आई थिंक दैट इज द मेन की फीचर ऑफ लव। थैंक यू। टैग I'll tag Bradley. विद्या भी बोलना है आपको। अच्छा, मुझे भी बोलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, ऑनेस्टली, बट the नहीं, thing it is I appears joined on it. this. The I thing mean, is that honestly, there was more of giving than receiving. I think you took the main message quite literally, so perhaps that says everything. no, see, for me, because I'm experiencing love, I really want to be very open with people, over here. It's really important to be open with everyone. So I just Yes, feel yes. like अगर अपने point of view रखो यार, why do you need to, actually just stay quiet like others? Yes, people should not be in ignorance. And something from today's class, what we discussed. So देखो, आज हमने I was आप not आप there. टाइम लीजिए सोचने के लिए। मैं No, सोच नहीं रही, this I'm is just saying कि no since I no no joined no this. loud thinking right now. You joined it at the right time, and we discussed a lot of things which probably you'll have to process in order to speak. So you take time. Meanwhile, you speak up any other person's name, but Mm, you'll have to give a point before leaving the class. yeah, sure, I'll give a point very happily. Uh, Take someone's name. Astha's name. She's Astha. very pretty. और थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रूजी, क्लास बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स थे और द पॉइंट विच आई रियली लाइक्ड वाज कि लव इज अनकंडीशनल एंड द क्वेश्चन यू आस्क्ड, मतलब अगर वो सच में जो आजकल गिफ्ट्स एंड सब चल रहा है वो अगर उसमें लाई करता है, बिकॉज कुछ लोग तो सिर्फ दिखाने के लिए भी देते हैं, मतलब जैसे मैंने देखा है कि ताकि लोग देखें, या स्टोरीज डालते हैं ताकि लोग देखें और अप्रिशिएट करें, एंड ऑल्सो दैट वी हैव टू पेशेंटली फॉर द राइट वन इफ वी वांट समवन इन अ लाइफ जिससे हम सच में मतलब प्यार कर सके। सो आई फील वी शुड वेट पेशेंट बिकॉज दिस इज नॉट द राइट, I mean, nahi, this depends on everyone. But if someone wants to date, so I guess they should be honest, ताकि फिर वो future तक रह सके। Okay. All the best. I would also like to give out a specific point over here is that we should also try to see true love beyond just the opposite sex at our equals. उससे बियॉन्ड भी देखना चाहिए क्योंकि उसके बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। Srila Prabhupada writes that true love is actually seen in this world. The purest form of love is seen between a mother and her child, infant के बीच में, wherein there is no expectation of return, there is all sacrifice and there is care, concern, attention to detail, everything. तो वहां पे हमको purest form of love दिखाई देता है, but this is just not and it should not be limited to just between the opposite sex. उनको देखना चाहिए, we should be careful, vigilant and conscious enough to see it at other forms also. आस्था किसको टैग करोगे आप? Oh yes, Avni. Hare Krishna Prabhuji, and I think मेरे लिए सबसे important point है that we need to wait and we have time है and the right time will come and love is sacrifice. Yeah, and Yes. I'll tag Arjun. यस जी, तो मैंने सीखा कि इम्पोर्टेंट कि लव इज बियॉन्ड द हग्स एंड चॉकलेट्स एंड मतलब वो उससे बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे जाता है
और मतलब एक लव एक सरफेस लेवल की चीज नहीं है, और मतलब बहुत डीप होता है, और उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे सबने बोला सैक्रिफाइस और रिस्पेक्ट और सेल्फलेसनेस। हम्म मैं गौरव भैया को टैग करता हूँ। गौरांग की आवाज आपको आ रही है क्या? नहीं प्रभु जी। क्या गौरांग भाई, उतार दे अपनी ईयरफोन को, फेंक दे दूंगा, हर बार का ये समस्या होता है। अब आ रही है प्रभु जी? हाँ। यस प्रभु जी। मैंने ये समझा कि अ पर्सन इज फाउंड एंड लव इज जनरेटेड, डेवलप होता है। और एक तो मैं वृद्धि दीदी के लिए बहुत ज़्यादा, मैं मैं तालियां बजाना चाहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से पूरी क्लास को इन्होंने संभाला है मतलब हमें बोलने का चांस ही नहीं दिया। ओ थैंक यू बहुत सो अच्छे से, मच। बहुत ऑनेस्टली एक बात बताऊं, नहीं नहीं, आप ऑनेस्टली समझो, वो सार्काज्म यूज कर रहा है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आई डेफिनेटली अंडरस्टूड, एंड मैं एक बात बोलना चाहती थी बिफोर लीविंग प्लीज। कि thank you so much for this honor कि I came to this class to actually debate and practice for my debate competition, so thank you to you all for giving me this time. आवर And one प्लेजर। more thing I learned, that ignorance is the key to success. That was abrupt. I'm Sia, I think your friend really needs to be educated about this. Ignorance is definitely not the key to success. I'm sure you will do the honors. आप ही बोल दीजिए अभी। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास थी, और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ट्रू लव कैन बी फाउंड, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू कांट जस्ट की स्टे लाइक अरे मेरा तो हो गया, यू हैव टू वर्क हम्म ऑन इट, यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स। यस, वेरी ट्रू। एंड पता है, इसीलिए हमारे जो स्क्रिप्चर्स है ना, दे बिकम वेरी रेलेवेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज हमको देखने में तो लगता है कि वो मिथिकल स्टोरीज हैं, बट जो वहां पे हमको क्वालिटीज दिख रही है ना, परसिस्टेंस, एंड्योरेंस, that is what we need to practice, and those were normal people who practiced all that things in their life. They were people who did all sorts of mistake, है ना, but उन्होंने उनको रेक्टिफाई किया। भागवतम इज फुल ऑफ सच स्टोरीज, जिसके बारे में पीपल हु आर एवरेज, हु गॉट एंग्री, हु गॉट जेलस, हु गॉट लस्टी एंड ऑल दीज थिंग्स, और उसमें फंस गए सब लोग। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, दे टुक pain, they made efforts, and they tried to practice bhakti, and they tried to rectify their things. That is why scriptures बहुत important role play करते हैं हमारी लाइफ में, जिसको हमको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जो हम कर देते हैं बहुत आसानी से, बोल के कि हाँ ये तो उस समय की बात थी, अभी तो कुछ फायदा नहीं है। एंड yes, we get swayed by the different आडंबर and allurements of this world. सी, आप किसी को टैग करेंगे? भाविक। भाविक। Hare Krishna, Prabhuji. So I kind of joined in the later part of the class, but I really liked that point जहाँ पे आपने जो शांतनु महाराज की स्टोरी को रिलेट किया था ऑनगोइंग पॉइंट से, कि ऑल दो मतलब ट्रू लव था भी, और वो मतलब बाकी लोगों की तरह बस अंदर लेके बैठे नहीं रहे, उन्होंने एक्सप्रेस भी किया, और हम्म उन्होंने उनके पास सारी कैपेबिलिटी भी थी कुछ भी करने के लिए, मतलब चाहे चांद भी मांग लेते तो भी वो ले आते, बट फिर भी एंड में उनको मतलब ट्रू लव वो मिल नहीं पाया। सो हम्म मतलब वो मेरे को स्टोरी अच्छी लगी जो फिट इन हुई। आ, या that's it. शांतुमास कहानी से मैं एक और जो मैसेज देना चाह रहा था, वो ये था कि इट टू लव इज अनकंडीशनल, जहाँ पे इट वाज बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो कभी कभार जो हमको लगता है हमारे लिए सही है ना, वो हमारी किस्मत में नहीं होता। देन वी हैव टू ट्रस्ट कृष्णा ऑल्सो। दैट इज ऑफ कोर्स अ मच हायर प्रिंसिपल, इसमें टाइम लगता है। भाविक, आप टैग करेंगे किसी को?
सुनाई दिया किसको टैग करा फारूक ने? अरिंदम अरिंदम। So Prabhuji, I think Ramayana as a whole story, the love is actually an aspect in the whole story, and we can see amazing examples. As you mentioned, आपने भी खुद बताया जैसे उर्मिला देवी है, beat Mother Sita and beat Lakshman. So I think overall we get to see amazing examples from Ramayana itself. So I personally admire the whole story, our own history. So मुझे सबसे best part लगा जो अपने examples दिए, and I think they are actually wonderful. मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए। मतलब हम लोग मोर ऑफ एक्सटर्नल्स पे जाते हैं when expressing love। मतलब of course हम्म it's a very small aspect of it, but हम्म the greater part is our internals, our attitude and our behavior. I think that plays a very major role in that, our main intention in that हम्म thing, because of course as today's youth, as truly said by you, uh, सबको पता है बिकॉज आई सी इन माई स्कूल ऑल्सो। सो मैं अपने क्लासमेट्स को भी देखता हूँ, सो बड़ा अजीब सा लगता है दैट दिस इजंट आवर कल्चर, मतलब इंडिया में जैसे था पहले, बट इट्स ऑल वी आर ऑल बीइंग मिसलेड बाय द वेस्टर्न कल्चर एंड एवरीथिंग। हम्म सो द ओवरऑल क्लास वाज रियली वंडरफुल प्रोग्राम, थैंक यू फॉर दैट क्लास। टैग किसको करेंगे आई आप? विल टैग भास्कर। भास्कर का हम स्वागत करते हैं। भास्कर also joined us for the first time. You can see the drastic difference between two people who joined us for the first time. One was girl who left recently, and there is another one still here. Hare Krishna Pooji. So the point that stick to me the most was कि सेम थिंग कि हमारे स्क्रिप्चर्स में इतना सब कुछ है और हम कभी कभी सोचते हैं कि मतलब ये सिर्फ स्टोरीज है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो इतना सब कुछ है सीखने को। और अगर मतलब हमें इन सब स्टोरी से सीखना चाहिए। और एक्चुअली हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अरे जैसे भीष्म पितामह है कि वो तो इतने महान थे, हम उनके जैसे कभी बन ही नहीं सकते। बट ऐसा नहीं है, हम्म जैसे आपने सही में बोला कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन थे जिन्होंने जिन्होंने एक्चुअली में अपने अपने जैसे डिजायर्स को कंट्रोल किया या फिर इतनी जैसे घोर तपस्या करी। तो उनसे हम सीख के भी हम वो सारी चीजें अपने में इंकलकेट कर सकते हैं और हम एक्चुअली में उनके जैसे बन भी सकते हैं। तो वेरी ट्रू। थैंक यू भास्कर। आप टैग करोगे किसी को? अनुप। जी, अगर प्रेम को मेरे हिसाब से अगर प्रेम को दो शब्दों में अगर तोला जाए तो एक है समर्पण और एक है समर्पण और उनके प्रति प्रेम से हम तोल सकते हैं, ये मैं समझ पाऊँ। हम्म समर्पण और त्याग। थैंक यू अनूप। सक्सेंटली समराइज्ड। आप राधिका को टैग कर दो। जी राधिका। Prabhuji, thank you for the class. It was really wonderful and really helpful. And it was an important topic at this time because we all are, surrounded by that environment where people are talking about it and we feel कि क्या ये सच में सही है या नहीं. So it was wonderfully explained. And I had a question कि जैसे आपने शांतनु के बारे में बताया कि he experienced love many times. हम्म So in my perspective, it was the bodily affection. And I just want to ask that is it true that there is only one person that you love in your entire life, or there are other people you can also find out? Shantanu's me saying Shantanu found his true love was definitely a mocking. If you did not understand it before, this was done on Actually, I left purpose. in a bit, Oh, so I yes. Yes, it was an infatuation जिसके चक्कर में फंसे थे. Perhaps the reason why story comes in Mahabharat and in Bhagavatam we hear the story of Pururava and Urvashi. ये सब चीजें जो हम सुनते हैं, it is just to teach us कि we should not be swayed by things. सब चीजें. Coming to the fact that can we find true love in more than one person?
Well, yes, there are different kinds of rasas that we experience. Krishna experiences different kind of rasas for different people. There are 12 major rasas. There is Madhurya ras, there is Vatsalya ras, there is Sakhya ras, there is Dasya ras, and there is Shant ras also. तो दास्य रस के अंदर हनुमान जी का जो प्रेम है भगवान राम के साथ में, दैट इज ट्रू लव। साख्य रस के अंदर जो अर्जुन का कृष्ण से है, जो मधुमंगल का है, या जो गुह का भगवान राम से, दैट इज ट्रू लव। एंड सिमिलरली पेरेंट्स के अंदर, चाहे वो देवकी माता का है, चाहे वो कौशल्या और दशरथ का है, या फिर वो यशोदा और नंद का है, दैट इज देयर। तो वी कैन फाइंड इट इन डिफरेंट पर्सन्स। अब बात रही इसकी, जो हम इसमें सुनते हैं कि विद द ऑपोजिट सेक्स देयर इज जस्ट वन ट्रू लव। आई एम नॉट रियली इन अ पोजिशन टू आंसर दिस, नॉट डू आई हैव द नॉलेज, नॉर हैव आई रेड इट। एंड मूवीज पे तो बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए इसके अंदर। तो यस। And my take from the whole thing is that there are the five love languages. I really like them. That you should actually show affection, give gifts, and reciprocate your love. हाँ, तो ये बताने का पर्पस ये था, टू बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल्सो, कि हर एक व्यक्ति एक की एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है ना, या फिर देयर आर डिफरेंट ways to express love. It is not just one particular way. जैसे हमको दिखाया जा रहा है, this was just to ये मतलब पर्दा उतारने के लिए, to remove the guise of the media, जिस तरीके से हमको मॉडर्न वे में दिखाया जाता है, दिस इज व्हाट लव इज। सिर्फ इतना नहीं होता, उसके बहुत डिफरेंट वेज भी होते हैं, ये बताने के लिए था उसका पर्पस। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इसके अंदर, एंड टू इट सो दैट इट enables us to see also कि हाँ ऐसे करके भी एग्जिस्ट करता है संसार में। Yeah, what I meant to say was that sometimes we don't reciprocate what we are doing. In the case of like me saying some good words to my mother, that would be very tiresome for me. So in that case, I feel that I should express my love to her and my parents to anyone. Sure, you can wait for Mother's Day or you can do it right away. Brinda, your question. हाँ, सो क्लास इज ओवर ऑफिशियली, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो रुक सकता है, अदरवाइज वील जस्ट एंड। मतलब हाँ, यस, सही बोला मैंने। Brinda, your question. There's a question here. I just wanted to add one thing which is a Sure. little unrelated to the topic. I also learned this today that if we go somewhere with this kind of a mode, aggressive mode, कि हमें जाके वहाँ पे डिबेट करना है, तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे बिकॉज आपने इतना अच्छा बताया आज, इतना आई मीन यू नो, अगर हम थोड़ा रिसेप्टिव मूड में कहीं पे भी जाएंगे तो हमें इवन अगर कोई इरेलीवेंट चीज बोल रहा है उससे भी हम सीख पाएंगे। बट अगर हम अग्रेसिव मूड से जाएंगे तो अगर हमें सबसे प्योर चीज भी हमें कोई दे रहा है, सबसे परफेक्ट नॉलेज भी हमें कोई दे रहा है, हम वो नहीं रिसीव कर पाएंगे एंड हम एक्चुअली अपना ही और हार्म कर देंगे। So I felt this is also something I learned today from Very today's true. class. Therefore, Krishna teaches in the Bhagavad Gita what is the way to learn. What is that shloka, Arjun? You said it, Arjun. जी हाँ, अर्जुन ने नहीं बोला था, अर्जुन को बोला गया था। मैं एम जस्ट चेकिंग इफ ही रिमेंबर्स इट और नॉट। जी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। क्या बात है, मेमोरी। हाँ, आपका क्रेडिट है, कृष्णा ही दे रहे हैं ना। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपनम च। सो दैट इज द वे टू लर्न। तद्विधि प्रणिपातेन, फर्स्ट यू हैव टू बिकम हम्बल। Unless and until you are not in the receptive mode, and till the time you are in a challenging mode, you can't learn anything. आप सीख नहीं पाओगे फिर, अगर आप उसी से ही जाओगे कि मेरे को बोलना है, मैं बोलने आया तो। yes, that is true. That is something we should apply in our lives, not judge other people with it. अपनी लाइफ में अप्लाई करना है हमको, है ना। अच्छा है, हमारा क्या उसकी प्रैक्टिस हो गई, डिबेट की क्या जा रहा है, हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, मिलते हैं जल्दी फिर से। ओ राम,
कुछ बोलोगे? नहीं प्रभु जी, बहुत लेट ज्वाइन करा था, कुछ बोलने को है नहीं, बट कोई हाँ नहीं, आई एम श्योर कि मैंने कुछ बड़ा ही मिस कर दिया आज। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो जी, हरे राधे कृष्णा। राधे।